अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग क्रैब्स बना रहे हैं। जी हाँ, एक ट्रेडिशनल वे में, नए अंदाज में और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रहे क्रैब्स ग्रेवी करी। इमीडिएटली नवाब्स किचन के स्टाइल में बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। चलिए। क्रैब्स का जो ग्रेवी का प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग मसाला पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसी लिए हम लोग इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करके भुनेंगे। इसी पाउडर के साथ साथ हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस भी भुनेंगे। ऑनियंस और कोकोनट पाउडर भुनते वक्त ही हम लोग इसमें कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स और सीसम सीड्स ऐड करेंगे। रोस्ट करा हुआ इन्हीं मसाले अच्छी तरह ठंडे हो गए बाद इसमें और थोड़े इंग्रेडिएंट्स करके हम लोग ब्लेंड करेंगे। पहले इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ इसी में हम लोग टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे। इसी में हम लोग टमाटोस भी ऐड करेंगे। टमाटोस के साथ साथ इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मसाला पेस्ट तो तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले बाउल में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम लोग अच्छी तरह वॉश करा हुआ क्रैब्स इसमें ऐड करेंगे।
ऑयल में क्रैब पीसेस 2 मिनट तक अच्छी तरह भुने बाद जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ मसाला पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। सारे मसालों में क्रैब्स 10 मिनट तक अच्छी तरह पके बाद टेस्ट के लिहाज से इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी को हम लोग लिड क्लोज करके 10 मिनट तक पकाएंगे। रेसिपी परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसको हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। इसी रेसिपी को हम लोग बगारा राइस के साथ नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए। आज के वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। उसके साथ साथ नवाब्स किचन ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। उसमें भी बहुत सारे वीडियोस है और वो वीडियोस को एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।